Hello everyone, welcome to this session. Welcome to BYJU'S Exam Prep. I hope all of you can hear me. मेरी आवाज़ आ रही है और सुनाई भी दे रही है. Just let me know in the chat box in case you have joined me live. अगर live join किया है तो ज़रूर chat box में बताना. This session is for CLAT 2024 and it's a logical reasoning practice set 1. ऐसे हम बहुत सारे sessions करने वाले हैं. This is just first of them. So make sure in case you are new to this session, new to this channel, you press the subscribe button because if you do then you would get notifications for the future sessions. तो अगर पहली बार आए हो so don't miss pressing the subscribe button. Okay, and let me tell you what are we going to do in these sessions. We are going to work on basic kind of questions. We are going to understand the basics of logical reasoning and we would do it through passages because CLAT, as you know, since 2020 से CLAT पैसेज बेस्ड हो गया है, तो हम पैसेजेस के थ्रू करने वाले हैं. ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा फन लर्निंग सेशंस होने वाले हैं. तो मेक श्योर यू डोंट मिस देम. स्प्रेड द वर्ड, टेल योर फ्रेंड्स, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, व्हाटएवर यू कैन डू, यू मस्ट ट्राई एंड डू दैट. ओके, दृष्टि इज देयर, ज्योत्सना इज देयर. गुड इवनिंग गाइज. ऑफ कोर्स आई विल continue now. As you keep on joining, just let me know in the chat box में hi बोलना. And if you're watching me after the session is over, then you can also let me know by writing in the comment box. Okay, comment box में you can tell me what kind of questions you want us to take up, what kind of problems you're facing, what kind of issues you're facing, or what are your other concerns. आप सब बता सकते हो. We will try to get back. We will try to help you. My name is Krishnendu Sir and I am a critical reasoning expert here. तो शुरू करते हैं. नीतू इज देयर, अंशु इज देयर. अंशु तुमने सॉरी नीतू ने आते बोला गुड नाइट. नीतू क्लास के एंड में बोलेंगे गुड नाइट ना, अभी तो शुरू हुई है, तो गुड इवनिंग इज अ बेटर वन. तेजू गुड इवनिंग. सो बिफोर आई मूव ऑन लेट मी क्विकली टेल यू, बिना भूले याद रखना 15 Jan 7 o'clock in the evening you will have a session on, it's a workshop. वर्कशॉप किस बारे में है? तो वर्कशॉप होगा कि हम CLAT 2023 से क्या सीख सकते हैं एंड उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं इन आर प्रिपरेशन फॉर CLAT 24. सो इफ यू आर थिंकिंग ऑफ CLAT 24, what can you learn from CLAT 23 and how can you apply it on your preparation is what is going to be discussed by Nivedita Rajay in this session 15 Jan 7 PM. Don't miss this session. अभी से इसके नोटिफिकेशन का बटन प्रेस कर दो so that you can get notification the moment the session goes live. Okay, and you can spread the word also. and इस सेशन को आप लाइक भी कर सकते हो जैसे ये लाइव होता है वैसे ही. ओके, गुड इवनिंग दृष्टि. नो, प्लीज रिमेंबर गाइज, आई विल कम टू इट. इन CLAT लॉजिकल रीजनिंग इज बेसिकली द क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन. जो लॉजिकल रीजनिंग होता है उसे क्रिटिकल रीजनिंग बोला जाता है. दे आर द सेम, डोंट थिंक दे आर सेपरेट थिंग्स. दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों बिल्कुल एक चीज ही है. लॉजिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल रीजनिंग सेम थिंग. ओके, CLAT does not really ask analytical reasoning questions. You can expect analytical reasoning questions in ALET and we will do separate sessions for them or those kind of questions also. हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, but you have to have patience. Day 1 से तो सब कुछ नहीं कर सकते है ना. तो ये वाला वर्कशॉप जरूर मिस मत करना. and as you know, one of our very own classroom, full-time 1-year classroom program student has scored or got AIR 18, which is a big deal in ALET. ALET is a very tough exam, so you can be the next. Why not, right? If you work hard, if you can put in the required effort, so आप भी कर सकते हैं. So without wasting any more time, let's straight away start. What I'm going to do is, because I don't know, you might be watching me after the session is over. हो सकता है सेशन के बाद देख रहे हो मुझे आप, तो आपके साथ आपके just to help you, आपको थोड़ा सा फायदा हो जाएगा. I am going to read this very quickly, line by line, and how should you read? I will discuss that also. Okay, so pay attention and you start reading it. पहले इस पैसेज को पढ़ के देखते हैं और पढ़ने के बाद देखते हैं कि इसके अंदर क्वेश्चन क्या आ सकते हैं और इन पे क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं या आते हैं. Okay, so we are going to do that. You have to read with me. I am going to look at your comments also. कुछ भी पूछना हो कमेंट में टाइप कर सकते हो. ओके, Neetu Rathor, somebody from our team will get back and answer your question. Amruta, good evening. Okay, चलो तो शुरू करें, कर लेते हैं because I think
काफ़ी लोग आ गए हैं, राइट। चलो भाई, so Neetu, we have just posted the number. If you want to talk to our counselor, you can give us a call there, or we will get back at you if required. But हमने आपको नंबर दे दिया है, आप अपना नंबर मत शेयर करो, because online it's not a good thing. आपको नंबर दे दिया, आप प्लीज़ उस नंबर पे कॉल करना and somebody will talk to you and clarify your doubts. Okay, अपना नंबर मत पोस्ट करना लाइव चैट के अंदर, will not be a good thing. Okay, can we start now? All right, let's start. So let's read it. आराम से पढ़ते हैं. In recent times, there has been a great euphoria. Now remember everyone, whenever you read newspapers, anything, magazine, book, whatever, whenever you see a new word, make sure that you, if the word is coming repeatedly, not once in a while, if it comes repeatedly, check the meaning, check synonyms, check origin, and look at the usage also. Euphoria is extreme happiness, right? In recent times, there has been a great euphoria about investing in cryptocurrencies. Now, some of you already probably know what is cryptocurrency. Some of you may not know. Cryptocurrency basically is a considered or is called a currency, but whether it's a currency or not, that's a different thing. Okay, we'll discuss it. So it says, in recent times, there has been a great euphoria about investing in cryptocurrencies. But the author says, let's first try to understand whether a crypto investment means an investment in a currency or an asset. Whenever the author is talking about let's understand, or author says in my opinion, pay double triple attention, because author's main point could be around that sentence. Okay, understood? जहाँ पे भी author कहता है let's understand this first, let's consider that first, let's check this first, analyze this first, look at this first, pay attention, question निकल सकता है वहाँ से. Author is saying let's try to understand whether cryptocurrency is a currency or an asset. This person has a doubt कि भाई ये करेंसी भी है कि नहीं है, या asset भी है कि नहीं. इन्वेस्टमेंट तो asset में करते हैं ना. We don't invest in something else, right? Something which can give us something back is what we invest in. For any instrument to classify as currency, it must have the following features. Author starting में बता दे रहा है भैया करेंसी कहलाने के लिए ये फीचर होने चाहिए. If you want to call something currency, it should have certain features. One, it is a promissory note. Promissory note means it's a note of promise. You are basically making a promise, wherein the issuer is promising the bearer or the holder a value. If you look at 100 rupee or 500 rupee note, you will notice उस पर लिखा होता है मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ. I promise to pay the bearer a sum of 100 rupees, something like that. That's a promise. That promise is made by the governor of the RBI, correct? If I take the money, that currency note to someone and somebody says, no, it's kagaj ka tukda, it's a piece of paper, I can say, no, it's a promise by the RBI governor. You have doubt, please go and check, ask the person, right? This is the first quality of a currency. Two, it is backed by a sovereign nation. For example, India's currency is backed by a country. Suppose tomorrow I take out my own currency. I give you a piece of paper by writing that I promise to pay you 100 rupees on this paper. Will it become a currency note? No, because there is no nation backing it. I'm just an individual. पूरा देश चाहिए इसके पीछे, है ना? Therefore, there is never a question of any default in executing the promise. कल को मैं भाग गया तो कौन पैसा पे करेगा? But country तो भाग नहीं सकती. 3. The printing of currency in either physical or digital form is always based on some tangible asset like gold or basket of goods. Third is, you print currency only when you have something to back up. For example, suppose तुम्हारे पास 1 टन गोल्ड है तो उस गोल्ड के बराबर या उससे 3 या 4 गुना ज़्यादा करेंसी नोट प्रिंट कर सकते हो. If you print currency notes just like that, then you are printing currency notes out of thin air. फिर उस करेंसी नोट की वैल्यू क्या है ना? तो अगर मेरे पास 1 टन गोल्ड है और 1 टन गोल्ड की कीमत लेट से 25 करोड़ रुपए है या 50 करोड़ रुपए है, तो उसके बदले में 200-250 करोड़ रुपए के नोट प्रिंट कर सकता हूँ. क्योंकि कल को कोई अगर आ गया और कि भाई मेरे इस नोट के बदले में आपके पास क्या है, तो मैं शो कर सकता हूँ भाई मेरे पास गोल्ड है, राइट? सो दीज आर द एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स दैट ऑथर सेज करेंसी में होना चाहिए. इसके बिना करेंसी की वैल्यू क्या है? फिर तो कोई भी करेंसी छाप लेगा घर पे प्रिंटर लगा के, है ना? सो ऑथर इज गिविंग यू 3 certain qualities of a currency. Now let me ask you guys, pay attention and tell me, based on these 3 qualities, can you tell me in the comment box, based on these 3 qualities right now,
कैन यू टेल मी व्हाट विल द ऑथर से अबाउट क्रिप्टो करेंसी? क्या लगता है क्रिप्टो करेंसी को एक करेंसी बोलेगा कि नहीं बोलेगा? आई वॉन्ट योर आंसर in the chat box, everyone. Please let me know quickly, based on these three qualities, do you think the author will say cryptocurrency is a currency? Yes, please. Lakshmi, oh Amruta, you are Lakshmi. All right, that's nice, good to see you. Sonali Kumari, if you get good marks in the scholarship, you get very good discount in our courses, in our course fee. Okay, Sonali. Jyotsna, it would be, don't worry. Drishti says no, Jagseer says yes बोलेगा, Teju says no, Amruta says no. Jagseer, Rahul Kumar, good. I think you have missed probably something. Okay, maybe you joined late or something. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है मैंने. Author has given you three qualities, right? Based on that, will he call cryptocurrency a currency? First quality that author talks about is that it's a promissory note. Cryptocurrency में लिखा होता है कि 100 रुपए दूंगा, 200 रुपए दूंगा? नहीं. Is it backed by a sovereign nation? Cryptocurrency is backed by any country? For example, America backs cryptocurrency, Bitcoin, Dogecoin? No. Can you print cryptocurrencies? Or even in digital form, is it backed by some tangible asset? Not at all. सब हवा हवाई है. क्रिप्टो करेंसी में everything is हवा हवाई. Yes or no? Suppose tomorrow I want to make a cryptocurrency. If I have the technical knowledge, I can do it, right? I can simply do it. I do not have the knowledge of building it, but कर सकते हैं ना, टेक्निकली कर सकते हैं, है ना, थियोरेटिकली कर सकते हैं. मुझे आता नहीं है, अलग बात है. Now look at the next passage. Can crypto then be considered an asset? Now understand. Did you guys notice the author has changed his question now? पहले क्या पूछा था? Did you notice? पहले पूछा था कि भैया क्रिप्टो करेंसी को करेंसी बोल सकते हैं क्या? और 3 क्वालिटीज बता दिए. आंसर नहीं दिया. अब कहता है चलो ठीक है, असेट बोल सकते हैं क्या? यानी one thing is very clear that if you ask can we call cryptocurrency currency, according to this author very clearly cryptocurrencies cannot be called currency. फिर कहता है कोई बात नहीं, असेट कह सकते हैं क्या? क्रिप्टो करेंसी को करेंसी ना सही असेट कह लें. आई होप इट इज क्लियर एवरीबडी. राहुल, यस एब्सोल्युटली, दैट्स करेक्ट. राहुल, यस यू आर राइट. सोनाली, you decide. Even if its immediate utility is intangible, an asset should have some tangible benefits. अब कहता है asset बोल सकते हैं क्या? ये कहता है immediate utility is intangible. Whose? Cryptocurrencies. An asset should have some tangible benefits. कहता है कि भाई asset में कुछ tangible benefit होना चाहिए. For example, suppose you have a house, you can stay in it, you can rent it out. Suppose you have a car, you can go from place to place. Suppose you can rent it out, you can sell it off, right? Do something. The cryptocurrencies are nothing but gaming points. ये कह रहा है भाई क्रिप्टो करेंसी क्या है? गेमिंग पॉइंट है. Whenever a discussion on cryptos take place, promoters talk about blockchain technology. कहता है जब भी क्रिप्टो करेंसी की बात होती है, प्रोमोटर तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं. टॉक अबाउट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एज ए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी समथिंग लाइक यू नो आउट ऑफ द वर्ल्ड. ऑथर सेज दिस टेक्नोलॉजी इज जस्ट अ टेक्निक टू अकाउंट फॉर ट्रांजैक्शन. कहता है इस टेक्निक का इस्तेमाल तो सिर्फ ट्रांजैक्शन करने के लिए होता है. सपोज मुझे क्रिप्टो करेंसीज कहीं से लेके किसी को देना है, आई हैव टू यूज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से इतना ये महान नहीं हो जाता. इट डजंट बिकम अ बिग थिंग जस्ट बिकॉज इट इज यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, राइट? It says and has nothing to do with cryptocurrencies except that the cryptocurrency digital exchange is being maintained in a blockchain format. In other words, the points which are earned through a gaming application are stored and transferred through blockchain technology. However, absurd it may seem, even the points earned in a game of Ludo can be presented as cryptocurrency if they are stored and sold by blockchain. Mining and solving the nth root of an equation are euphemism. Euphemism means sweet words for something offensive for gaming points. You understand last line क्या कह रहा है यहाँ पे? ऑथर कह रहा है कि भैया सुनो,
आप जो है ना ये क्रिप्टो करेंसी यूज कर रहे हो वर्ड, बट सच्चाई ये है कि ये सब गेमिंग पॉइंट्स हैं बस। ये ना क्रिप्टो करेंसी है ना असेट है, इसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, ये तो गेमिंग पॉइंट्स हैं। क्या बात कर रहे हो आप? इज द ऑथर्स पॉइंट क्लियर एवरीवन टिल नाउ? समझ में आ रही है बात कैसे पढ़ना है? रिमेंबर एवरीवन, यू माइट बी रीडिंग दीज थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम ऑल्सो। हो सकता है पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, वर्ड्स हार्ड लग सकते हैं, लैंग्वेज अनफेमिलियर लग सकता है, बट अगर शुरू नहीं करेंगे तो कभी पहुंचेंगे ही नहीं। सो यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग इट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, है ना। तो ये मैंने न्यूज़पेपर से उठाया है, दिस इज बेसिकली फ्रॉम अ न्यूज़पेपर, आई विल शो यू द सोर्स ऑल्सो। तो आपको ऐसी चीज़ों की पढ़ने की आदत होनी चाहिए। जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एवरीवन, यू एबल टू फॉलो द ऑथर्स पॉइंट। ऑथर का पॉइंट समझ में आ रहा है ना? ऑथर क्लियरली कह रहा है कि भैया ये बकवास है, ये क्रिप्टो करेंसी ना, ये करेंसी है ना, ये एसेट है, क्या है ये, बेकार है बिल्कुल। ओके चलो अगला देखते हैं। इन माई प्रोफेशन I had come across frauds like multi-marketing schemes, chit funds, deposit frauds. These schemes were disguised as timeshare scheme, gold land investment, promised hefty return. These pyramid schemes were carried out over a long period to evade the law. Nevertheless, fraud could still be established, the trail of funds could be traced and perpetrators identified. ये कह रहा है कि देखो मेरे प्रोफेशन में मैंने फ्रॉड्स पकड़े हैं, मल्टी मार्केटिंग स्कीम पकड़ा है, चिट फंड पकड़ा है, डिपॉजिट फ्रॉड पकड़ा है, और इन सब में फ्रॉड कोर्ट में फ्रॉड को हम प्रूव कर पाए, कोर्ट में हम फ्रॉड को प्रूव कर पाए, हम फंड का ट्रेल ढूंढ पाए, फंड कहां से कहां गया, किसके अकाउंट में गया, और जिन्होंने ये किया था उसको हम पकड़ पाए। अब आगे देखो क्या लिखता है, क्रिप्टो प्रोमोटर्स हैव टेकन फ्रॉड टू अनदर लेवल। कह रहा है भाई क्रिप्टो प्रोमोटर जो है ना, उन्होंने तो फ्रॉड को अलग ही लेवल पे लेके चले गए हैं। यानी वो जो पहले कर पाया है, पर्सन इज सेइंग व्हाटएवर आई कुड डू अर्लियर, अब नहीं हो सकता। ना आप फ्रॉड स्टैब्लिश कर पाओगे, ना आपसे ट्रेल होगा फंड कहां गया, ना बता पाओगे कौन कर रहा है। पढ़ के देखो, लिटिल स्कोप ऑफ देयर गेटिंग कॉट एज देयर इज नथिंग दैट एनीवन इज प्रॉमिसिंग। कह रहा है फ्रॉड कैसे साबित करोगे, कोई प्रॉमिस तो कुछ कर ही नहीं रहा। व्हेन कैन यू प्रूव फ्रॉड? हैव यू एवर थॉट? दिमाग लगाओ, लॉ पढ़ने जा रहे हो, फ्रॉड कब स्टैब्लिश कर सकते हैं? सपोज आई टेल यू दैट इफ यू गिव मी 1 लाख रुपीज, आई विल गिव यू 5 लाख रुपीज इन 2 months. आई एम प्रॉमिसिंग यू अ हाई रिटर्न. Suppose I don't pay you 5 lakh rupees, then you can sue me because there is a fraud. But suppose I tell you, okay, take this 1 lakh rupees, you give me 1 lakh rupees, and then I will, and after that I say nothing. You have just given me the 1 lakh rupees. Then what can you do? If I tomorrow disappear, what will you tell police wala? Right? Police wala will ask, why did you give him the money? He will say, just like that. तो पुलिस वाला विल से ओके, देन ही वैनिश्ड जस्ट लाइक दैट, भाग गया, अच्छा है, अब आप घर जाओ। इफ देयर इज नो प्रॉमिस, हाउ डू यू प्रूव फ्रॉड? राइट? तो ऑथर कह रहा है ये क्रिप्टो वालों को तो आप पकड़ भी नहीं सकते क्योंकि वो कुछ प्रॉमिस तो कर ही नहीं रहे। आप ही खरीद रहे हो डॉज कॉइन, इथीरियम और बिटकॉइन। वन पार्ट इज द पर्सन और पर्सन्स रिलीजिंग द गेम और द इक्वेशन फ्रॉम विच बिटकॉइंस और क्रिप्टो करेंसीज आर टू बी माइंड. द अदर इज एक्सचेंजेस थ्रू विच दीज पॉइंट्स आर ट्रेडेड. The so-called cryptocurrencies have acceptability only as long as they are linked to the normal currency of a country. कह रहा भैया क्रिप्टो करेंसी की तभी तक तो एक्सेप्टेबिलिटी है ना जब किसी देश के करेंसी के साथ उनका लिंक होगा। ये सब कुछ है ही नहीं इसके अंदर, तो आप कैसे किसी को पकड़ोगे? यहाँ गेम बहुत हाई लेवल का चल रहा है, बट आप पकड़ नहीं पाओगे, ना कौन कर रहा है पकड़ पाओगे क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करने से आपको मिलता है, ना आप ये साबित कर पाओगे कोई फ्रॉड कर रहा है। तो ये गेम ही अलग चल रहा है। बाय नाउ लेट मी आस्क यू गाइज, बाय नाउ हैव यू अंडरस्टूड द ऑथर्स मेन पॉइंट? नाउ लेट मी आस्क यू, इज द ऑथर फॉर क्रिप्टो करेंसी और इज द ऑथर अगेंस्ट क्रिप्टो करेंसी? अगर इस बंदे के पास क्रिप्टो करेंसी का ऑफर लेके गए तो ये तुम्हें चपेट मारने वाला है या तुम्हें प्यार से वेलकम करने वाला है? कैन यू गाइज टेल मी, विल दिस गाय गो मैड एंड शूट यू इफ you try to sell him cryptocurrency, or will he get absolutely misty-eyed and will embrace you, saying that, oh, I'm so happy you are selling me cryptocurrency? What do you think will happen? Can you type your answer jaldi se? Absolutely. Zoya Khan, hello. थोड़ा लेट हो गए. Against, meet. Absolutely. इसके पास अगर चले गए क्रिप्टो करेंसी लेके तो ये तुम्हारे सर पे पत्थर मार देगा, पक्की बात है. दिस गाय इज अगेंस्ट क्रिप्टो करेंसीज, देयर इज नो डाउट.
about it, I think. Yes or no? Okay, chalo, बहुत बढ़िया. Unfortunately, millions are falling for this fraud globally. This guy is calling cryptocurrencies fraud. Direct criminals, particularly drug syndicates, will simply use the garb means disguise, garb means dress, of crypto to siphon and launder their illegal proceeds. He's basically saying that in using cryptocurrencies, these drug smugglers, they will use cryptocurrencies to make their money from black to white. और ऐसा एक्चुअली हो भी रहा है पूरी दुनिया में. The recent aggressive promotion of cryptocurrencies on print and visual media would perhaps prove to be the undoing of their promoters. Now pay attention to this line, everyone. It says, जहाँ पे भी opinion हो ना, opinion, ध्यान देना. Wherever opinion of the author comes, pay attention. The recent aggressive promotion of cryptocurrencies on print and visual media would perhaps prove to be the undoing. Undoing means it will lead to its downfall. It will lead to its collapse. Author is saying promotion, aggressive promotion of these cryptocurrencies will lead to its collapse. Pay attention. The advertisements and promotional activities can, in fact, be important evidence linking people with this fraud. Sensing the impending ban and investigation into crypto deals, their backers have already started developing a new jargon. Jargon means a very, very specific language used by some people. Jargon सुना होगा word. नॉन फंजिबल टोकन्स और एनएफटी. वो कह रहा है क्रिप्टो करेंसी में अब लग रहा है हाथ टाइट हो रहा है, तो इसके जो प्रोमोटर्स हैं, इसमें जो पैसा लगाते हैं, वो एक नई चीज़ बेच रहे हैं. दैट्स कॉल्ड एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन्स. यानी क्रिप्टो करेंसी तो बिक नहीं रहा, तो अब एनएफटी पे फोकस जा रहा है लोगों का. दिस इज द पैसेज, दिस इज फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस, जस्ट टू शो यू व्हाट काइंड ऑफ स्टफ यू शुड बी रीडिंग. इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीवन? आपको ऐसी चीज़ें पढ़ना शुरू करना है अभी से लेकर क्लैट तक, और उसके बाद भी ऑफकोर्स, बट अब ये लेवल चाहिए. अगर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए रीडिंग करते हो तो कर सकते हो, बट नाउ यू हैव टू रीड स्लाइटली हार्डर स्टफ ऑल्सो. यू मे नॉट लाइक ऑल दिस, बट रिमेंबर एवरीथिंग वी लाइक मे नॉट बी वेरी बेनिफिशियल. है ना, जंक फूड का एग्जाम्पल पता ही है. बर्गर खाने में मज़ा आता है, बट बर्गर खा के 6 पैक बनाना थोड़ा मुश्किल काम है, मतलब काफ़ी मुश्किल काम है. तो पढ़ना तो यही पड़ेगा. थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें आप पढ़ सकते हो, बट दिस इज व्हाट यू हैव टू रीड. रीड एटलीस्ट 1 or 2 आर्टिकल्स पर डे. स्टार्ट डूइंग ऑल दैट इफ यू आर नॉट डूइंग any of that. Did you understand the passage everybody? समझ आया, मज़ा आया पढ़ के? समझ में आया ना ये ऑथर क्या कहना चाहता है, ऑथर का ओपिनियन क्या है? एंड यू मे हैव पेड अटेंशन टू सर्टेन लाइन्स ऑल्सो. मैं आपको 1-2 क्वेश्चन दिखाऊंगा जस्ट टू गिव यू सम बेसिक आइडिया कि किस तरह की चीज़ें आपसे एक्सपेक्टेड हैं. एंड देन ऑफ कोर्स we would do many more such sessions. If you want such sessions, of course you have to tell me in the comment में लिखोगे नहीं तो मैं सेशंस नहीं लेने आऊँगा, बिकॉज फ़ायदा क्या है ना. तो अगर सेशंस ऐसे चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखना. एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑफ कोर्स प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, सो दैट यू गेट नोटिफिकेशंस, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स अस रीच मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. है ना. तो अगर समझ आ गया है तो क्वेश्चन दिखाता हूँ. ओके, आई विल जस्ट शो यू वन क्वेश्चन. ट्राई द क्वेश्चन नाउ. लेट मी सी. All right, chalo, let's have a look at a question. Okay, which of the following conclusions can be drawn from the paragraph? Conclusion basically means that it must be true based on the passage. Okay, now you have 4 options, guys. Can you read and tell me, according to you, which of the following should be correct? According to you, based on the passage, which sentence, which option should be correct? Koma Haritha. I am not able to understand your question. If you write without using short form, then probably I can help. Okay, can you guys try? Very simple question. You have read the passage, you know the answer, but try answering it. A Shorts Special says A Shorts Special. What is your name? Amruta is Gonapa, right? Lakshmi. D Divya. A Mr. Ramesh. A Mr. Ramesh, yeah, understood. A, okay. Don't spam. I think you have pressed enter multiple times. Okay.
Very good, very good. And this is why you should come to these sessions more. Okay, so I'll tell you the correct answer. Only one person got the correct answer. The correct answer is D for Delhi. Okay, not A. Now, because Lakshmi, I think, has been, was that Lakshmi? Amruta was Lakshmi, right? If I forgot your name, then just excuse me, right? But only she gave the correct answer, and after that Rahul has given the correct answer. But Rahul, you're very late. You can't be this late. Your answer has to come fast, very, very fast. So the correct answer is D. It's not A at all. Now can you figure out why before I tell you? Koma Haritha, I have answered. I just said please write it in without using short forms. I was not able to understand your question. Okay, so Amruta says yes. All right, the correct answer is D. Now understand why. This is why you have to do logical reasoning, critical reasoning so much. A is not the correct answer. It looks like the correct answer. First, look at the word never. This word is called an extreme word. Okay, we discuss many such shortcuts, many such insights in our regular classes. If you want to benefit from our classes, you are most welcome to join us. Look at option 1. It says it is clear that cryptocurrencies can never be a currency. Author in the passage is saying that in the first part it says that currencies have these 3 qualities, right? Right now cryptocurrency does not have these qualities, so right now it cannot be considered a currency. But can you therefore say that it can never become a currency? What if tomorrow, suppose a government, let's say government of Venezuela starts backing it, tomorrow they start giving you promise also, tomorrow some country starts buying gold in to back cryptocurrencies, how can you say that it can never be a currency? Never is an extreme word, right? And therefore very clearly this word makes the answer incorrect. Now what is different in option D? Check option D. It's clear that cryptocurrency is unlikely to be a currency. Unlikely means there is a very less chance. But can it become? Maybe. Is there a chance? Yes. Can it be a currency tomorrow? Yes, 100%. Look at the word never, look at the word unlikely, and then tell me, did you understand why the answer is D? And this is what you have to learn. This is called finding the differentiator in options. अगर ऑप्शन में डिफरेंशिएटर नहीं ढूंढोगे तो आंसर्स नहीं मिलेंगे, कितनी भी कोशिश कर लो. इज इट क्लियर? Koma Haritha, before your board exam, before, okay? So suppose you are, let's say in 2024 December, you are in your class 12th. You must write the exam that year in 2023. Suppose you are graduating, suppose you are doing your 12th, you are passing out from your 12th in the month of May or June in 2024. Then you must write CLAT 2023, okay? So you have 1 year time, you must prepare right now. Do not wait for boards to get over. That would be too late. Okay? Understood? All right. Try one more question. Let me see if you guys can handle it. Okay? Inferences basically means that based on the information, it is true. Okay? That's it. Check all the options and tell me which option, read the question, which of the following inferences cannot be drawn from the passage above? Means what? You have to find one option which is not true based on the passage. That's it. Just read the options and tell me the correct answer. Quickly. Which of the following options is not true? That's all. Koma Haritha, you're most welcome.
Can I have the answer quickly? आंसर बताओगे तभी आगे चलेंगे, वरना नहीं चलेंगे. All right, Rahul says B. Divya Thakur says C. Jagseer says A. Short special C. Teju B. I hope you guys have liked the session already. Okay, that helps us reach more number of students. Make sure you do. Ramesh C. Rahul B. Azad Netaji C. All right, so A, B and C I have received so far. All right, I'll help you with the answer. I can see some correct answers. I think Divya got it right. I think Amruta got it right. Ramesh got it right. Azad Netaji got it right. The correct answer, of course, is option C. Now, not true, you have to find not true, right? Now, look at option 1. Promise of some return is an essential ingredient in proving fraud. This we discussed, right? If you don't promise something, there is no fraud. Suppose somebody says, I'll give you 20% return in 1 month, and then the person runs away. Then it's a fraud because the person promised you. Correct? So this is something which is correct. We have to find not true. But this is true. Option 1 is true. Right? This is true. Now look at option 2. The author is likely. Likely means probably true. Is to have worked with some law enforcement agency. Now look at this. Author says, in my profession, I have come across frauds like multi-marketing schemes, cheat funds, deposit frauds. In my profession, I have come across frauds. So who is this person? This person can be a journalist, can be a police wala, can be CBI, can be ED, can be a judge, can be a lawyer. Correct? So are we sure 100% that this person is from a law enforcement agency? This person is from a police team or from ED or from CBI? No. But can this person be called likely to be? May have worked? Yes. May have, yes. Likely means may have. That we can say. Now look at option C. Aggressive promotion proves to be generally beneficial for a product. It's clearly given. The recent aggressive promotion of cryptocurrencies proved to be undoing. Aggressive promotions have become the reason for cryptocurrencies failure. Then can we say that aggressive promotions are beneficial? It's not true. Not true. They can be very dangerous also. Assets have some value. Obviously, this is written directly, right? The person says, can crypto then be considered an asset? Even if its immediate utility is intangible, an asset should have some tangible benefits, right? So, option D is definitely true. There is no doubt about it, right? So, which one is the correct answer? Correct answer is C. Did you guys understand the basic point here? You have to learn how to read and more importantly how to eliminate. पढ़ना भी सीखना होगा और साथ में एलिमिनेशन भी सीखना होगा. जब आप दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से करोगे तभी आपको वो जगह मिलेगी कॉलेजेस के अंदर जो आपको चाहिए. If you're looking for a dream top 5 or top 6 colleges, they are also looking for the best students from all across the country. You have to find out whether you are one of those best students. If you enjoyed the session so far, make sure you press the like button, share with your friends, tell them, press the bell icon, subscribe, and more importantly, attend our sessions regularly. We are doing sessions every single day for you guys and we keep on doing it around the year without fail. तो अगर पसंद आया, मज़ा आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना. ऐसे सेशंस और चाहिए तो, कोई स्पेसिफिक सेशन चाहिए तो भी बताना. हम बहुत सारे नए नए एक्सपेरिमेंट्स भी करते रहते हैं और जो मैंने बताया है याद रखना, 15 जैन 7 o'clock वर्कशॉप तो बिल्कुल मिस नहीं करना है. संडे का दिन है, 7 o'clock शाम के 7 बजे. CLAT 23 से क्या सीखा और किस तरह से उसे CLAT 24 में अप्लाई कर सकते हैं. डोंट मिस दैट सेशन. दैट सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्रोग्राम बिफोर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. बिफोर आई लीव, लेट मी क्विकली टेल यू, हमने CLAT 24 का बैच ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है एंड इसके अंदर ज़बरदस्त फीचर्स हैं. 300+ रिकॉर्डेड सेशंस हैं एंड ऑल 5 सेक्शंस कवर होते हैं. 300+ आवर्स के लाइव क्लासेस हैं. 35+ मॉक टेस्ट हैं. मंथली मैगजीन, ये तो मैं भी रेगुलरली पढ़ता हूँ, बहुत ज़बरदस्त करंट अफेयर्स के, और कंटेंट इज़ मेड बाय द वेरी बेस्ट इन द इंडस्ट्री. तो अभी तक अगर इनरोल नहीं किया, डाउनलोड द ऐप. यू कैन कॉल अस ऑल्सो एट दिस नंबर
Make sure you don't miss doing that. And I'll see you again. Thank you so much, guys, for joining me here. If you like the session so far, make sure you let us know. All right, guys, thank you so much. If you got both questions correct, you have done a good job. Have a good night's sleep, everyone. Thank you so much for joining us here. Please take care. Bye-bye, everybody. Thank you.